Hello बच्चों, the question says here the motor of an electric train moving with a velocity 54 kilometer per hour. तो motor is moving with a velocity 54 kilometer per hour and consume a power of 900 kilowatt. The effect efficiency of the motor is 0.8 efficiency दिया है and determine the tractive forces of the motor. सबसे पहले we need to highlight here the key concept. Key concept is the पावर पावर हमें फाइंड करना है तो वी नीड द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दिया है तो पावर इज एक्चुअली वर्क अपॉन टाइम standard formula work upon time but you know that work is nothing but the force into displacement upon time लेकिन यहाँ पे s by t का आंसर will be v तो power is f into v we need to use this formula यहाँ पे now velocity is given in the kilometer per hour इसको हमें पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा that is 54 into 5 by 18 can I say 18 1 जा 18 3 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी हो गया राइट now then we need to find the input power तो power output is given here 900 kilowatt power input is given actually this is power input for 900 kilowatt so power input is equal to 900 kilowatt तो हमें यहाँ से efficiency से power output find करना होगा then we need the formula efficiency is equal to power output upon power input so output power is equal to p output is equal to efficiency is 0.8 and power input is again 900 this is the power input which is in kilowatt 8 into 90 kilowatt but हमें यहाँ पे ट्रैक्टिव फोर्स फाइंड करना है फॉर दैट so for tractive force you need to use the formula power is equal to force into velocity तो पावर आपको आउटपुट में कितना यूज हो रहा है 8 into 90 kilowatt and force is unknown but velocity is 15 then F stands for tractive force which is equal to 8 into 90 upon 15 15 ones are 15 6 this is 48 किलो न्यूटन ओके बिकॉज दिस वाज किलोवाट तो आपका ट्रैक्टिव फोर्स विल बी 48,000 न्यूटन होप यू अंडरस्टैंड इट वेल बेस्ट ऑफ लक